Hello everyone, welcome you all on Anthropology Inside classes, and the topic of today's lecture is Lower Paleolithic culture in India. Okay, I'm going to start. Lower Paleolithic culture in India. Before going to Lower Paleolithic culture in India, first we know about the history of development of archaeology in India. It was Colonel Meadows Tyler. Yes, Abu, good morning. Colonel Meadows Tyler, he was one of the earliest to show interest in Indian archaeology in early 19th century. Then Alexander Cunningham in 1861 and Robert Bruce Foote in 1963 started explorations and recordings in prehistoric antiquities of India. तो इस तरह बिगनिंग हुई इंडियन आर्कियोलॉजिकल स्टडीज की अलेक्जेंडर कनिंघम in 1861 and Robert Bruce Foote in 1863. They started explorations in prehistoric antiquities of India, and it was Robert Bruce Foote means the credit to study the first Paleolithic tool from India goes to Robert Bruce Foote, and he reported the first Indian Paleolithic handaxes from South India at a place called Pallavaram near Chennai. Then Burkitt in 1930 created climatic succession for Indian Pleistocene on line of Richardson for African prehistory. तो अफ्रीकन प्रीहिस्ट्री के लिए जैसा कि रिचर्डसन ने प्लिस्टोसीन सक्सेशन को डेवलप किया था, सेम वैसा ही कुछ फॉलो कर बर्किट ने 1930 में फॉर इंडियन प्लिस्टोसीन के लिए उसने क्लाइमेटिक सक्सेशन को क्रिएट किया, एंड ही आल्सो रिपोर्टेड ऑन कमेट्स स्टोन एज tools collected from Lower Krishna Valley. Then D. Terran Patterson, he in 1913 published his study on Kotwal Plateau in Punjab, now in Pakistan. Then Michael Todd in 1939 reported Upper Paleolithic from Khandivi, Bombay. In 1861, Archaeological Survey of India was established in India. Then A.C. Carroll, during 1863 to 1885, he discovered microliths and Mesolithic cave paintings in rock shelters in Mirzapur. Then Stuart Piggott, he wrote book Prehistoric India in 1950. Then Sir Mortimer Wheeler in 1944, he developed vertical sequencing of excavated materials. Then it means he arranged on the basis of materials he found in excavation. Then in 1961, the first international conference of Asian archaeology was organized by Archaeological Survey of India. In 1965, D.D. Koshambi wrote a book on the culture and civilization of ancient Indian historical outline. Then Subba Rao in 1958, he wrote book on personality of India. H.D. Sankalia in 1974, he wrote a book Prehistory and Proto-History of India and Pakistan. It's a very popular book in archaeology. And then new archaeology is called by Bin Clark Bin Clark Revolution by Dhavalikar. And Sankalia gave lecture on this topic, New Archaeology in 1974. So in this way, archaeological studies developed in India. Now we come to Lower Paleolithic culture in India. तो as you know that Lower Paleolithic culture यूरोप एंड अफ्रीका के बारे में जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, जो Paleolithic culture की खासियत है मीन्स इज द old stone age. Paleolithic means old stone age, and old stone age divided into lower, middle and upper on the basis of different findings. Means earliest tools are classified as Lower Paleolithic tools, and they are placed under the Lower Paleolithic culture. Then the later tools in between the lower and middle, they were placed in Middle Paleolithic, and then Upper Paleolithic culture, that is the Late Stone Age. तो इस तरह क्लासिफाई किया गया on the basis of different findings
इन स्ट्रेटा में जो भी लैंड स्ट्रेटिग्राफी में, जिसमें कि लोएस्ट लेयर में जो भी हमें टूल्स मिले या आर्टिफैक्ट्स मिले, उसके आधार पर हमने उसको ओल्डेस्ट लेयर माना। मीन्स लोएस्ट जो लैंड में सबसे नीचे की जो लेयर खुदाई के बाद मिली, दैट वाज द ओल्डेस्ट लेयर in land stratigraphy. But in case of terrace stratigraphy, in case of रिवर जो रिवराइन साइड थी, वहां पर जो टेरेस स्ट्रेटिग्राफी में जस्ट इसका अपोजिट होता है, और इसमें जो अपर लेयर होती है दैट इज द ओल्डेस्ट लेयर, और लोएस्ट लेयर जो नीचे की लेयर्स होती हैं उनको यंगर लेयर माना जाता है। पर लैंड स्ट्रेटिग्राफी में नीचे की लेयर को ओल्डर और अपर लेयर को यंगर माना जाता है। तो इस तरह डिफरेंट जो फाइंडिंग्स मिली टूल्स और आर्टिफैक्ट्स की, उसके आधार पर हमने लोअर पैलिथिक, मिडिल पैलिथिक एंड अपर पैलिथिक कल्चर में डिवाइड किया आर्कियोलॉजिस्ट ने। तो इन केस ऑफ इंडिया, बिकॉज इंडिया इज अ वास्ट कंट्री एंड हियर मीन्स डाइवर्स कल्चर हमको देखने को मिलता है बिकॉज ऑफ डाइवर्स geography, means geographical conditions, climatic conditions, these are very means vary करती है, means from north to south, east to west, same नहीं पाएंगे आप। there are so many regional variations from east to west and south to north to south, and due to these huge diverse climatic conditions, flora, fauna, इंडिया में जो है यूनिफॉर्म या होमोजीनियस traits नहीं दिखाई पड़ते हैं in lower Paleolithic culture. The time period of lower Paleolithic culture in India is about second interglacial to third interglacial. That is 1 lakh, 10 lakh to 20 lakh years to in Punjab to 39,000 years ago in Deccan. ठीक है, तो 1 to 2 मिलियन ईयर्स एगो माना जाता है कि इसकी शुरुआत हुई होगी इंडिया में। और जैसा कि सभी जानते हैं आप लोग कि जो अर्लीस्ट ह्यूमन बीइंग था दैट वाज फाउंड इन अफ्रीका, ईस्ट अफ्रीका में, इथियोपिया में। द अर्लीस्ट ह्यूमन बीइंग ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो है वो, वहां से हमें टूल की डिस्कवरी मीन्स हुई सबसे पहले। द अर्लीस्ट टूल्स, चॉपर चॉपिंग टूल्स वेर फाउंड विद द fossil remains of Australopithecus, and the tools were pebble tools, mostly they were eoliths, pseudo artifacts भी कह सकते हैं, because at that time he was a ape-like creature and with semi-erect posture, और उस समय उसके जो हैंड था वो अपोजिबल था, उसमें डेवलप नहीं हुआ था, इसलिए ऐसा आर्कियोलॉजिस्ट मानते हैं कि वो नेचुरली शेप्ड पेबल्स रहे होंगे जो उसके means remains के साथ मिले। But on the basis of findings of several broken bones and stones, pebble stones, that culture is known as osteodentocerattic culture, Africa. And जो Indian Paleolithic, Lower Paleolithic है, it is very similar to African Lower Paleolithic culture, and but the ऑस्ट्रेलोपिथिकस जो बाद में माइग्रेट करके आए, मीन्स जब ह्यूमन यहाँ पे आर्केइक सेपियंस, देन यहाँ पर क्योंकि हमको लोअर पैलिथिक में ऐसी कोई स्पीशीज मीन्स ह्यूमन इवोल्यूशनरी स्टेज यहाँ पर नहीं मिलती, क्योंकि इंडिया में बहुत बाद में लोअर पैलिथिक कल्चर आया, जबकि अफ्रीका में अराउंड 3.3 मिलियन ईयर्स एगो लोअर पैलिथिक कल्चर की शुरुआत हो गई थी विद द रिमेन्स ऑफ ऑस्ट्रेलोपिथिकस। तो ऐसा फाइंडिंग्स से पता चला है। पर जो इंडिया में हमें जो फाइंडिंग्स मिलती हैं वो कहीं पर आपको पता चलेगा कि 1 to 2 मिलियन ईयर से वो ये स्टार्ट हो गया था। बट पोसेहल इन 1975 he assumed that entrance of human in India was around third interglacial, that is upper Pleistocene, and it is 1 lakh to means the whole Paleolithic, lower Paleolithic in India is from 1 lakh to 50,000 years ago. तो अलग अलग आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा हमें जो फाइंड मींस डेटिंग मिलती है लोअर पैलिथिक कल्चर इंडिया की, वो थोड़ा डिफर करती है, पर अराउंड 1 मिलियन to 2 मिलियन वो माना जाता है कि यहाँ पर लोअर पैलिथिक कल्चर की शुरुआत हो गई थी। तो मीन्स जैसा कि हम कह सकते हैं कि द टूल्स स्पेशली क्लेवर्स एंड हैंडाक्सेस दे शो वेरी सिमिलरिटी with the African kind of lower Paleolithic, and the
technique, Victoria West technique, that is also known as wall technique, VAAL wall technique, और उसी को पैरालेवलॉइज टेक्निक भी कहा गया। तो ये जो टेक्निक से टूल्स बनाए गए हैंडेक्स और क्लीवर उस समय अफ्रीका में, सेम वैसे ही कुछ हमें टूल्स यहाँ इंडियन लोअर पैलेथिक में भी दिखाई देते हैं, और जिसमें कि विक्टोरिया वेस्ट या पैरालेवलॉइज टेक्निक का प्रमाण मिलता है। वी हैव एविडेंस ऑफ दिस काइंड ऑफ टेक्निक्स इन स्पेशली इन मद्रासियन कल्चर कोटालायर वैली। तो टू कल्चर सिस्टम में डिवाइड कर दिया लोअर पैथिक कल्चर को, अर्ली स्टोन एज एंड मिडिल स्टोन एज। तो यहाँ पर जो मिडिल स्टोन एज, जैसा कि हमने लास्ट क्लास में बताया था, मिडिल स्टोन एज टर्म इज यूज्ड फॉर ओनली मेसोलिथिक कल्चर, बट इन केस ऑफ इंडिया एंड अदर कंट्रीज मींस यूरोप के केस में भी मिडिल स्टोन एज को मिडिल पैलेथिक के लिए यूज किया जाता था। लेकिन यहाँ पर जो लोअर पैलेथिक इंडिया है, यहाँ पर जो whole lower Paleolithic is divided into two culture system. Early Stone Age covers only lower Paleolithic, while the Middle Stone Age covers middle and upper Paleolithic. Means both middle and upper Paleolithic stages come under the Middle Stone Age. Not only middle, but both middle and upper Paleolithic culture. When we come to lower Paleolithic culture in India, we found that here are two cultural traditions. सोहानियन पेबल फ्लैग ट्रेडिशन और वो पेबल टूल ट्रेडिशन, जिसमें कि ओनली कोर टूल्स में मोस्टली हमको मिलते हैं, एंड द सेकेंड इज पेनिनसुलर इंडियन हैंडेक्स क्लीवर ट्रेडिशन। तो टू ट्रेडिशंस में डिवाइड कर दिया द होल लोअर पैथिक कल्चर। इंडिया हैज बेसिकली टू कल्चरल ट्रेडिशंस, फर्स्ट इज सोहानियन पेबल टूल ट्रेडिशन एंड द सेकेंड इज पेनिनसुलर इंडियन हैंडेक्स क्लीवर ट्रेडिशन। So Sonian pebble flake tradition, pebble tool tradition was first reported by D. Terra and Patterson. He led a Yale-Cambridge expedition, and D. Terra Patterson ने पोटवार प्लेटू में, that was in now in Pakistan, ये पोटवार प्लेटू एक raised प्लेटफॉर्म था, और जो कि ये चारों ओर मीन्स इट इज कवर्ड मीन्स बाउंडेड on four sides by four mountainous ranges, and this region is of 100 kilometer between Jhelum and Indus River. यहाँ पर मैप में दिखाई दिया है कि जो पोटवार प्लेटू है वो here is पोटवार प्लेटू and in between Jhelum and Indus River. तो झेलम और इंडस रिवर के बीच का एक 100 किलोमीटर का एक एरिया है, इसको पोटवार प्लेटू कहा गया। इट इज अ रेस प्लेटफॉर्म, ये माउंटेन पर चारों ओर इसको माउंटेनियस रेंजेस ने इसको कवर किया है, मीन्स चारों नॉर्थ ईस्ट साउथ एंड वेस्ट यहाँ पर माउंटेनियस रेंजेस हैं। फॉर एग्जांपल हिमालयाज ऑन नॉर्थ, इट वाज बाउंडेड बाय हिमालयाज ऑन नॉर्थ, साल्ट रेंजेस इन साउथ, पीर पंजाल इन वेस्ट एंड एक्सटेंशन ऑफ शिवालिक इन ईस्ट। तो इस तरह ये फोर माउंटेनियस रेंजेस से बाउंडेड है, एंड दिस रेस प्लेटू इज नोन एज पोटवार प्लेटू, एंड ऑन दिस प्लेटू there is a river flows, that is सोहन रिवर। तो सोहन रिवर फ्लो करती है इस रीजन में, एंड यहीं पर डी टेरा एंड पैटरसन ने सोहानियन पेबल टूल ट्रेडिशंस को फाइंड किया। So he get the evidences of lower Paleolithic tools here in Potwar Plateau, and it is divided into 6 zones of river terraces. TD is the lowest zone, then T1, T2, T3, T4 and T5. तो इन्हीं जोन्स पर ही डिफरेंट टूल्स मिले और उसको बाद में अरेंज किया गया डिफरेंट स्टेजेस में। तो टीडी जो है लोएस्ट जोन है, देन टी1 टी3, तो दीज आर द टेरेसेस, टेरेस के आधार पर, तो रिवर टेरेस यहाँ के आधार पर यहाँ पर टीडी टी1 टी3 और टी4 एंड टी5, ये 6 जोन्स में इसको डिवाइड किया गया, जो ये सोहानियन पेबल टूल ट्रेडिशन। Then next is this culture is divided, that is Sohanian culture is divided into several stages on the basis of tool typology, and first is the pre-Sohan or the Sohan कह सकते हैं pre-Sohan, SOAN, or sometime it is written as SOHAN। तो the tools collected from bounded TD terrace से यहाँ पर जो भी tools collect किए गए वो pre-Sohan के रूप में categorize किए गए, and the evidences are big flakes made from quartzite,
तो क्वार्टजाइट में यहाँ पर बिग फ्लेक्स बनाए गए हैं जो कि बॉन्ड कंडीशंस में है, नो सेकेंडरी फ्लेकिंग्स आर फाउंड. तो many archaeologists call these tools as pseudo artifacts. Then Mobius in 1944 and Fair Service in 1975 felt it as a debitage of early Sohan industry. तो उन्होंने माना कि प्री सोहन जस्ट ये जो अर्ली सोहन इंडस्ट्री है इसी का ये वेस्ट जो मटेरियल टूल्स बनाते समय जो वेस्ट रहा होगा वही ये प्री सोहन होगा. और इसी क्योंकि यहाँ पर हमें जो आर्टिफैक्ट्स मिले हैं मीन्स बिग फ्लेक्स मिले हैं उनमें कोई सेकेंडरी फ्लेकिंग नहीं पाई गई है और वो नेचुरल बेबल्स की तरह दिखाई दे रहे हैं. दैट इज व्हाई हिज Mobius in 1944 and Fair Service in 1975 felt it as a debitage of early Sohan industry. Then comes early Sohan. It was collected from T1 context and then next layer जो T1 है terrace वहां से इसको पाया गया and pebbles and flakes are found here. Early Sohan is divided into early Sohan A, early Sohan B and early Sohan C. ये तीन stages में further divided होता है. Early Sohan A shows heavily born and deeply patinated pebbles and not in large number. Then early Sohan B shows less worn and deeply patinated pebbles, and the early Sohan C shows least worn and patinated pebbles. Same pebble tools और कुछ side scrapers भी यहाँ पाए जाते हैं. तो ये इस तरह early Sohan को categorize किया गया. Then late Sohan आता है जो कि T2 context से means different terraces के से हम आगे बढ़े तो earliest pre Sohan, then early Sohan, then late Sohan, and late Sohan again divided into late Sohan A and B, and it shows similar type of pebble and flake tools. But here we get the turtle back type and levallois flake and tortoise core are also found. तो यहाँ पर जो लेवलाइजिंग टेक्निक से जो tortoise core बनाया जाता है, first core is prepared all around by flaking and then flake means एक final blow किया जाता है on the top of the surface and a core is detached from the main a flake is detached from the main core and the remaining core looks like tortoise core and the flake are known as levalloisian flake. तो इस तरह की लेवलाइजियन फ्लेक और टर्टोइस कोर यहाँ पर मिलते हैं लेट सोहन से. और जो साइट वहां पर जो इम्पोर्टेंट साइट है वन ऑफ द यूनिक साइट चांत्रा साइट जो कि इस पूरे सोहन इंडस्ट्री में मिलती है स्पेशली लेट सोहन. इट इज अराउंड 17 किलोमीटर साउथ ऑफ रावलपिंडी. तो जो कोटवार प्लेटू है वो रावलपिंडी पाकिस्तान में है. And more than 100 specimens of hand-axe cleaver are found. This shows mixture of late Sohan with the Avivilo-Acheulean traditions. तो यहाँ पर एविविलो एचुलियन ट्रेडिशंस के साथ लेट सोहन के कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाई देते हैं क्योंकि यहाँ पर हमें एचुलियन टाइप ऑफ हैंड-एक्सेस, टॉर्टोइस कोर और टर्टल बैक टाइप ये सारे कुछ दिखते हैं along with natural pebbles. Then comes the Acheulean tradition. So Sohanian tradition was the pebble flake tradition, while the Acheulean tradition जो late means बाद में develop हुआ and it was found in different parts of India. For example, in western region, central region, eastern and southern region. Western region में Gujarat and Rajasthan. We get the lower Paleolithic tools from Gujarat and Rajasthan. In Rajasthan, there are two sites, Chittorgarh and Didwana. Chittorgarh was excavated by V. N. Mishra. One of the richest Paleolithic across Aravallis. तो वी एन मिश्रा ने इसको एक्सकेवेट किया चित्तौड़गढ़ राजस्थान में. एंड देन सेकेंड इम्पोर्टेंट साइट इज डिडवाना नियर जोधपुर इन वेस्टर्न राजस्थान. It's an open river side and V. N. Mishra also excavated this Didwana. Didwana को भी उन्होंने ही excavate किया था in Nagaur district. Didwana is in Nagaur district and 3 depositional phases of excavated material was found. These are named as Jayal phase, Amarpura phase and Didwana phase. So Didwana, Amarpura and Jayal. Jayal was the earliest, then Amarpura and Didwana. फॉर्मेशंस में इन्होंने इसको जो डिपॉजिट्स मिले उसको तीन में मींस प्लेस किया.
According to dating, Didwana will be one of the earliest Lower Paleolithic industries. तो अर्लीस्ट लोअर पैलेथिक इंडस्ट्री इंडियन सबकॉन्टिनेंट से ये मानी जाती है डिडवाना. और large massive hand axes with chopper and chopping tools were found from early period, while medium hand axes with cleavers and chopping tools were found from later period. तो डिडवाना में हमें अर्ली डिडवाना जो पेजेस थे उनमें हमें चॉपर चॉपिंग टूल्स, बट द लेट डिडवाना पेजेस में we get the medium hand axes along with chopper chopping tools. Then the next site from Rajasthan is Luni. लूनी में भी हमें इसी तरह एचुलियन हैंड एक्सेस और क्लीवर्स मिलते हैं. देन गुजरात आता है, जो वेस्टर्न रीजन में दो स्टेट्स थे, गुजरात और राजस्थान. तो राजस्थान में 3 साइट्स देखे, चित्तौड़गढ़, डिडवाना एंड लूनी. एंड फ्रॉम गुजरात there are 2 sites, Umreti and Rohri. Umreti and Rohri. And Umreti is a site on river Bhadar. And it belongs to middle Pleistocene or late Pleistocene. ये belong करता है ये dating के according. And here we get the evidences of Clactonian type of hand axes along with chopper and chopping tools. तो जैसा कि आपने यूरोपियन अपर पैलेथिक, यूरोपियन लोअर पैलेथिक एंड अफ्रीकन लोअर पैलेथिक में पढ़ा कि जो भी टूल्स वहां पर लोअर पैलेथिक के समय पाए जाते थे, वही सारे टूल्स यहाँ पर भी हमें मिलते हैं प्रमाण के रूप में, एविडेंसेस के रूप में. And but the human evolutionary stage during the lower Paleolithic India is as Homo erectus, not Australopithecus. तो अफ्रीका में हमें जो अर्लीस्ट प्रमाण मिलते, that was of Australopithecus and then Homo habilis and Homo erectus. But here in India we get only the evidence of Homo erectus man in Narmada Valley. Then come to central region. सेंट्रल रीजन में नर्मदा वैली आती है, जिसमें कि इट्स अ प्लूवियल एरिया, मींस यहाँ पर रेन्स होती थी, एंड बिटवीन द होशंगाबाद एंड नरसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट. तो ये जो ये नर्मदा वैली है, ये होशंगाबाद और नरसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट में के बीच में एक प्लूवियल एरिया है जिसको नर्मदा वैली कहा जाता है. And in 1939, it was studied by D. Terra and Patterson, and who linked this site with the Sohanian culture. तो सोहानियन कल्चर को भी डी टेरा पैटरसन ने स्टडी किया था, उन्होंने एक्सकेवेट किया था सोहन वैली को, और यहाँ पर भी नर्मदा वैली को उन्होंने अगेन स्टडी किया in 1939, and he linked this culture with the Sohanian culture. Here 6 depositions are identified. And one of the important sites in Narmada Valley is Khatmara. And why it is important? What is the significance of this site? Because here we get the evidences of Narmada man. Narmada man का जो means पूरे lower Paleolithic India में इकलौता ये means ये site है Khatmara in Narmada Valley, which gives the evidence of Homo erectus man. In case of India, and that is known as Narmada man because it is found from Narmada Valley. That is why it is named as Narmada man. और यहीं पर हमको Homo erectus के remains मिलते हैं, और जो tools मिलते हैं that are जो कि late Acheulean period से ये belong करता है. यहाँ पर हमको tools means hand axes, cleavers तो मिलते ही, along with means hand axes and cleavers are found. But here no chopper chopping tools are found. Here chopper chopping tools are absent because of late Acheulean period, because it belongs to late Acheulean. Therefore, here we have the absence of chopper chopping tools, but only hand axes and cleavers are found, which were made on orthoquartzite rocks. The remains of mammals which were found from here are equus, bos and others. Other mammals भी मिले. तो equus bos ये जो है horse की variety है. equus bos यहाँ इनके remains मिलते हैं हमको नर्मदा वैली से. और सबसे important इस site की जो खासियत है, uniqueness है या significance कहा जाएगा, that is the Homo erectus remains, that is known as Narmada man from this site, Khatmara in Narmada Valley. Then come to आदमगढ़. तो ये जो सेंट्रल रीजन के ये साइट्स हैं, नर्मदा वैली, आदमगढ़, भीमबेटका एंड बेलन वैली, और इसमें कि आदमगढ़ और भीमबेटका, these two are cave sites.
while the other sites are riverine sites. तो और बाकी आपको लोअर पैथिक की सारी sites, all sites from lower Paleolithic India are open riverine sites. Only Adamgarh and Bhimbetka are cave sites. So Adamgarh is another late Acheulean site. Here also we get the low means hand axes and cleavers and Acheulean hand axes especially and cleavers यहाँ पर मिलते हैं. And it is a series of Adamgarh is a series of 9 rock shelters excavated by R.V. Joshi on the southern bank of Narmada in Hoshangabad district. तो नर्मदा के ही southern bank में होशंगाबाद district में we have a cave site that is Adamgarh, and it is a late Acheulean site. It has a series of 9 rock shelters and it was excavated by R.V. Joshi. But here जैसा कि नर्मदा में हथनौड़ा साइड में हमको चॉपर चॉपिंग टूल्स नहीं मिलते थे, but here along with the Acheulean hand axes and cleavers we have large number of chopper chopping tools. तो एक जैसा आपको नहीं दिखेगा, तो मींस नर्मदा वैली का ही दोनों साइट है, पर here we have large number of chopper chopping tools, while in Hathnora, case of Hathnora there is no chopper chopping tool. तो ये थोड़ा सा अंतर मिल जाता है और यहाँ पर भी एचूरियन हैंड एक्सेस और क्लीवर्स के तो मिल ही रहे हैं, पर इनके साथ चॉपर चॉपिंग टूल्स भी लार्ज नंबर में मिल रहे हैं. Then the third important site of central region is Bhimbetka, and Bhimbetka is another cave site. It's a cluster of caves and rock shelters in Raisen district of Madhya Pradesh, and it is 40 kilometers north of Narmada, and more than 700 caves and rock shelters were numbered. तो यहाँ पर भीमबेटका में जैसा कि आदमगढ़ में 9 रॉक शेल्टर्स थे, बट भीमबेटका is a means यहाँ पर series of 900 caves मिलते हैं और rock shelters मिलते हैं, and these are discovered by V.S. Wakankar in 1962. तो V.S. वाकनकर ने 700 रॉक शेल्टर्स और केव्स को डिस्कवर किया और उन्होंने इसकी नंबरिंग की 700 जो उन्होंने गिना इसको, और बाद में V.N. मिश्रा ने लेटर V.N. मिश्रा excavated one of the largest cave and numbered it third F23. So third F23 cave was excavated by V.N. Mishra, while the 700 caves and rock shelters were numbered and discovered by V.S. Wakankar. Okay. Then here cleavers and hand axes were present. जैसा कि Acheulean अगर कल्चर है तो ये तो मिलेंगे ही, और कहीं कहीं पर आपको चॉपर चॉपिंग टूल्स भी मिल जाते हैं. तो but in this side in Bhimbetka not a single chopper chopping tool was found. तो अभी ऊपर देखा कि आदमगढ़ में large number of chopper chopping tools were found with Acheulean hand axes, but in case of Bhimbetka only Acheulean hand axes and cleavers are found and not a single chopper chopping tool was found. तो ये हमें यहाँ पर थोड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है. Then next important site is BelanVally, and it is in Pratapgarh district of Uttar Pradesh and was studied by G.R. Sharma. And here medium-sized flake hand axes and cleavers are found, and the size of those hand axes and cleavers was around 10 to 12 centimeter. So this was about central region. Then come to eastern region, and क्योंकि जो हमें ये लोअर पैलेथिक कल्चर के जो प्रमाण मिलते हैं, evidences of lower Paleolithic from India is from whole India, all around throughout India we get the evidences of lower Paleolithic. Now in eastern region, there are 2 states, Odisha and Bihar, and also in West Bengal. So Odisha, Bihar and West Bengal we get the lower Paleolithic evidences. From Odisha, the 2 important sites, Kuliana and Kamarpara. Kuliana and Kamarpara in Mayurbhanj district on the river Burha Bhalang. Burha Bhalang that belongs to early Stone Age, that is lower Paleolithic. ये 2 साइट्स मिलती हैं, 2 important साइट जो कि पिट्स के रूप में मिलती हैं, और these are excavated by Nirmal Kumar Bose and Dharani Sen.
तो these two sites, Kuliana and Kamarpara in Mayurbhanj district of Odisha, on the river Burhabalang, excavated by Nirmal Kumar Bose and Dharani Sen. Then Mohapatra, another archaeologist, he also reported numerous sites along Burhabalang, Brahmani and Mahanadi valleys showing mixed tool culture. तो जो बुरहाबालिंग में तो सिर्फ अर्ली स्टोन एज कल्चर से जुड़े हुए ही टूल्स मिलते हैं, पर यहाँ पर कुछ मिक्स टूल कल्चर यहाँ पर मिलता है along these three rivers which was founded by Mohapatra. Evidences which are found from these sites are 50% tools belong to chopper chopping tools. यहाँ पर हमें ज्यादा जो मात्रा means 50% tools are chopper chopping, and while another 50% are Acheulean hand axes with cleavers are also found in single strata. तो एक ही स्ट्रेटा में हमें चॉपर चॉपिंग टूल्स भी मिल रहे हैं एंड Acheulean hand axes and cleavers भी मिलते हैं. तो ये हो गया उड़ीसा के बारे में. Then we come to Bihar. Bihar, the site is Singhbhum district in Bihar, South Bihar, and जो chopper chopping tools with hand axes and cleavers here also we found with these tools. Then Pasara in Munger district, it was discovered by Pant and Jaiswal in 1991, and here we get an habitation structure. यहाँ पर हमको एक हैबिटेशन स्ट्रक्चर मिलता है बिहार में ही. ये एक दूसरा साइट है पैसरा, और यहाँ पे हैबिटेशन स्ट्रक्चर मिलता है, फिनिश्ड प्लेग टूल्स मिलते हैं, सेवरल पोस्ट होल्स मिलते हैं. वही जो हैबिटेशन स्ट्रक्चर है वो पोस्ट होल्स के रूप में मिलता है, एंड अपर Acheulean hand axes एंड क्लीवर्स मिलते हैं. तो इट्स आल्सो एन इम्पोर्टेंट साइट फ्रॉम बिहार. Then T.C. Sarma around Rongram found more than 30 sites. T.C. Sarma ने भी बिहार में रोनग्राम में more than 30 sites को excavate किया. Then वेस्ट बंगाल में मिदनापुर आता है, जो कि वहां पर हमें चॉपर चॉपिंग टूल विद हैंड एक्सेस एंड क्लीवर्स मिलते हैं. तो इस तरह these are the evidences from the eastern region. Then come to peninsular region, and here we have the sites from South India and Maharashtra. So first is the Kortalayer Valley. Kortalayer Valley, which is situated in Chingalpur district of Tamil Nadu. So Kortalayer Valley is a very important site, and this means one of the important site of peninsular region of India. And the sites are special sites are, yes, Pranjal, Maharashtra is also included here. Chirki Nevasa river Pravara. This is one of the Maharashtrian site. Okay. So Kortalayer Valley in Chingalpur district of Tamil Nadu is the first site, reported by Krishna Swamy in 1938. कृष्णा स्वामी ने ही इसको 1938 में सबसे पहले खोजा था, and he termed this Kortalayer Valley जो findings मिली, he termed this as Madrasian culture. Krishna Swamy named this Kortalayer Valley site and findings as Madrasian culture. Okay, large number of asymmetrical Abelian hand axes. Abelian hand axes मिले यहाँ पर जो कि large massive hand axes होते हैं, along with the symmetrical Acheulean hand axes. तो Abelian hand axes are asymmetrical while the Acheulean, ये यूरोप कल्चर में आपने पढ़ा होगा Abelian ट्रेडिशन में Abelian hand axes जो large massive hand axes होते थे, and then Acheulean ट्रेडिशन में symmetrical Acheulean hand axes पाए गए, और उसके पहले pebble flake ट्रेडिशन था. Then come to Abelian and Acheulean. Here also in case of India we get the chopper chopping tool along with the Abelian hand axes and Acheulean hand axes. और Acheulean hand axes जो symmetrical hand axes मिले, तो especially इसमें amygdaloid, lanceolate and chordates मिलते हैं, and cleavers are found. No pebble tools are found here. No pebble tools are found here. Means यहाँ पर आपको chopper chopping tools नहीं मिलते हैं. Many tools show Victoria West technique. Victoria West technique of Africa. It was described by Reed Moir. Reed Moir ने इसको describe किया था Victoria West technique को, और यही टेक्निक जो है, this technique is also known as wall technique,
VAAL, because it is found near the wall in in Africa. तो अफ्रीका में वॉल एक साइट है, वहां पर ये इस तरह का टेक्निक का मींस फाइंडिंग्स मिली, और दैट इज व्हाई इट इज नोन एज वॉल टेक्निक, and which was later named by Francois Bourges as para-levallois technique. Why he called this para-levallois technique? Because it shows that here first a core is prepared, and then a final glow is made on the core, and then tortoise core type or discoid core is detached, and it shows that यहीं से मीन्स जो अर्लीस्ट टेक्निक मीन्स लेवलाइज टेक्निक जो कि मिडिल पैलेथिक ट्रेडिशन में हमको मिलती है, उसके पहले लोअर पैलेथिक में पैरा लेवलाइज टेक्निक मिली होगी, जिसमें इस तरह के टूल्स बनाए गए होंगे। तो फ्रैंकोइस बोर्ड्स ने इस टेक्निक को पैरालेवलाइज टेक्निक क्या कहा, which was known as wall technique in Africa because of the wall site in Africa, and it is also known as Victoria West technique. तो ये सारे जो टेक्निक के प्रमाण मीन्स एविडेंसेस of the tools made by these techniques are found from Kortalayer Valley, जो मद्रासियन कल्चर कहा गया by कृष्णा स्वामी in 1938. तो हियर वी गेट द वी शेप क्रॉस सेक्शन के साथ जो हमको टूल्स मिलते हैं क्लीवर एंड इंडेक्सेस, दे हैव वी शेप क्रॉस सेक्शन। तो वॉल टेक्निक की खासियत क्या है कि इसमें वी शेप क्रॉस सेक्शन मिलता है। देन नेक्स्ट साइट इज पालेरू इन प्रकाशम डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, एंड हियर वी गेट 60% हैंड एक्सेस, क्लीवर्स, नाइफ्स, एंड रेस्ट कवर्स ऑफ flakes and pebbles. Then third important site is Marathipalam and Chintalapalam. Marathipalam and Chintalapalam from Chittoor of Andhra Pradesh, and it was recorded by Rami Reddy. Here we get the tools like scrappers and axes. Scrappers means the tools of Middle Paleolithic culture are found here in Marathipalam and Chintalapalam. Then hand axes, cleavers, micro lunates, यहाँ lunates तक मिल रहा है, that are the tools of Mesolithic Europe. यहाँ पर हमें micro lunates भी मिल रहा है, and we get the levelized in place. तो variety of tools हमें मिलते हैं Marathipalam and Chintalapalam of Chittoor. It is in lower Paleolithic site, but we get the tools of Middle Paleolithic and Mesolithic Europe here. तो जो भी स्क्रैपर्स जो मॉस्ट्रियन ट्रेडिशन में मिलते थे यूरोप में, और माइक्रोलिनेट जो कि हमें मेसोलिथिक ट्रेडिशन में मिलते हैं यूरोप में, वो सभी यहाँ पे हमें लोअर पैलेथिक जो साइट्स है चित्तूर ऑफ आंध्र प्रदेश वहां से मिलते हैं। Then the next site is Gidalur and Nagarjunkonda near the river Krishna in Andhra Pradesh. So these are the very important sites from peninsular India. And then next is the Hansgi complex. Hansgi complex, it is from Shorapur Doab in Gulbarga district of Karnataka. And Padaya जो है उन्होंने रिकॉर्ड किया इन साइट्स को, हंसकी कॉम्प्लेक्स को, and here he get natural floors made by granite blocks. तो यहाँ पे natural floors जो कि granite block से बनाया गया होगा by the man of that time Homo erectus, वो प्रमाण मिलते हैं. It shows that they have the habitation structure, means natural floors इस तरह के parked floors मिलते हैं, तो it shows a kind of habitational structure there in Hansgi complex, and large number of artifacts were found on the floor. Remarkable freshness of finished tools is found. More than 27 localities were studied by him. Means Padaya studied 27 localities here in Hansgi complex. तो 27 localities को मिलाकर यहाँ पर हंसगी कॉम्प्लेक्स बनता है. Then मालप्रभा एंड घाटप्रभा from मैसूर, ये न्यूमरस साइट्स मिलती हैं मालप्रभा एंड घाटप्रभा से, और इसमें एक साइट का नाम है किबनहाली, ये मैसूर में है ये सारी साइट्स. देन चिरकी निवासा जो कि एक महाराष्ट्रियन साइट है, और जो कि मिडिल पैलोथिक में भी हम पढ़ेंगे निवासियन कल्चर, यही पर निवासा में ही वो डेवलप होता है निवासियन कल्चर. And here in lower Paleolithic also we have evidences from Chirki Nivasa on river Pravara, a tributary of Godavari in Ahmednagar district of Maharashtra. Gudrun Carvinus uncovered 20 to 40 centimeter thick alluvial mantle and exposed lower Paleolithic industry below it.
तो इसके नीचे उन्होंने लोअर पैलियोलिथिक इंडस्ट्री पाई गुदरून फॉरविनस ने एंड टोटल एब्सेंस ऑफ प्लेट टूल टाइप्स हियर, यहाँ पर प्लेट टूल टाइप्स नहीं मिलते हैं एंड हैंडाक्सेस क्लीवर चॉपर्स आर फाउंड लेट एचुलियन साइट्स it is a kind of late Acheulean site and much younger than French Acheulean. So this is all about peninsular India, and with this I conclude the whole lower Paleolithic India. Thank you Pranjal, thank you Dinesh, and thank you Abu for joining this class. Meet you in next class.